Again. We have more guests with us here in the studio. We have Pathikrit Pine, Senior Research Fellow, SPMRF, joins us again today. Then we have Mr. Anirban Sharma from the P20 Task Force. And we also have Ambassador Yogesh Gupta joining us. Pathikrit, what is your take on all that happened yesterday, the joint statement that came out, and what are your expectations from the crucial two sessions that are happening today, one on women-led development and the other one on digital public platforms? First of all, good morning to everyone. See, I think I'm not surprised by the joint declaration that came, because most of the issues that are part as theme of this were part of the the declaration that came as part of G20, the final summit. So because most of these issues were already addressed over there, it was all but natural that these would be taken care of here as well. One more important reason is that, see, these are the issues on which nobody can have any contradiction. It is not about a Ukraine issue. It is not about a Middle East issue. It is about talking about sustainable development. It is talking about how you would use digital public infrastructure for the purpose of making sure that the beneficiaries of welfare schemes of government reach the people. It is talking about, how you make sure that your developmental protocol and mechanism eventually ends up, helping and empowering women, because when you empower a woman, you're empowering a mother, and invariably the next generation would come up in a better way. So I think most of the issues are so genuine, and some of the templates that India has put forward in terms of what can be done. If you look at, I just want to give an example. Over the last 8-9 years, the developmental work that has been done by Prime Minister Modi, many of those issues actually directly benefit women. For example, when you talk about Swachh Bharat, when you have 11 to 12 crore toilets being made, it actually tremendously helped the women. Secondly, when you talk about Mudra scheme, under which more than 40 crore people were given loans to start their own enterprises, small business, or to expand it. 70% of the loan actually went to women. So you are making women self-sufficient, so that you do not need to, they don't need to actually remain dependent. At the same time, when you empower a woman, you are empowering the whole family. There are 6.8 crore women in India who are involved in the self-help groups. So this is how, or if you talk about, some of the other issues, in every sphere, or the reservation. So it is not just about the reservation of women in the parliament. The entire approach over the last 7-8 years has been the Beti Bachao Beti Padhao scheme actually helped in improving the sex ratio. So these are the things in which I think these are templates which many other developing countries, be it in Africa or Global South, can actually emulate for their countries. And I think there was no reason that the declaration would not come. I'm happy it has come, but it was not surprising. जी हाँ, योगेश, आप लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और बात करें डिक्लेरेशन की, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये विषय जो है चर्चा के लिए सामने लाना, क्योंकि कहा जाता है कि G20 राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन था, वहाँ पर निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए, क्रियान्वयन की बात की जाए, इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए, तो उसके लिए P20 का ये शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो G20 में घोषणा पत्र सामने आया, उसके बिंदु सामने आए, उस पर सहमति बन गई है। P20 के डिक्लेरेशन में भी उस पर संवेद रूप से सभी संसदों को काम करना होगा। कितना महत्वपूर्ण डिसीजन है ये? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्स का रोल बहुत क्रूशल है। कोई भी जो नई पॉलिसीज हमारे देश की है, उनका सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में लाई जाती है, डिस्कशन होता है, उसके बाद वहाँ अप्रूवल होता है, तो फिर सरकार को कि ये निश्चितता होती है कि भाई हाँ, ये पॉलिसीज दीज आर बैक्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो पार्लियामेंट का एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में G20 समिट जब हुआ, तो कई उसमें मेजर फैसले उसमें लिए गए थे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, इकोनॉमिक इश्यूज भी थे, सोशल इश्यूज भी थे, एनवायरमेंटल इश्यूज भी थे, फूड सिक्योरिटी के इश्यूज थे, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज थे, विमेन लेड डेवलपमेंट के इश्यूज थे। तो इन सबके ऊपर देखिए पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये G20 कंट्रीज की पार्लियामेंट्स ने इसको अप्रूव किया है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अक्रॉस द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, 85% ऑफ कंट्रीज
वो इस पर एग्रीमेंट है कि भाई हाँ ये मुद्दे जो है इम्पोर्टेंट है और इन मुद्दों को जो है हमें आगे परसू करना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अरिनब शर्मा। अनिर्बान हम बता दें कि अनिर्बान शर्मा। चेयर T20 टास्क फोर्स और कॉमन डिजिटल फ्यूचर से जुड़े हुए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर आज का दूसरा और पूरे शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र आयोजित होने वाला है। और डिजिटल दुनिया की अगर बात करें, डिजिटल क्रांति की बात करें अरिनब, तो हम लोगों ने दिशा दिखाई है पूरे विश्व को। Thank you very much for your question. I hope you can hear me. Uh, and to begin with, thank you very much for having me on this program on Sansad TV. It's a pleasure to be here. So, as you rightly pointed out, I represent the Think 20 Task Force on Digital Public Infrastructure. And as you know, DPI has been one of India's core priorities and focus areas during its G20 presidency. And this is important because DPI has emerged as a proposition that India is being offered to the world, and it's now increasingly being adopted by other countries in other parts of the world. All right. So, why is DPI important? It does three core things. It mediates the flow of people through digital identity systems like Aadhaar, the flow of money through systems like the Unified Payments Interface or UPI, and also the sharing of personal information, financial information, without compromising privacy through frameworks like the DEPA, the Data Empowerment and Protection Architecture. Now, India is an absolute pioneer in this space because we became the first country to build all these three foundational DPIs under the architecture of the India stack. And this has never been done before. Now, obviously, because India's experiments with DPI have been successful, and there are very concrete measures of success. For example, today, Aadhaar is used by more than 99.9% of the country's adult population. All right, Indians are making more than 30 million transactions every day using the UPI. DEPA has revolutionized the national credit landscape, and of course, it's because of this DPI architecture that India, in the last 6 years alone, has been able to achieve 80% financial inclusion. That is staggering in terms of numbers. All right, so now because of this widespread success with DPI, other countries are now beginning to adopt it. So in 2018, ahead of our G20 presidency, we had set up this modular open source identity platform, or MOSIP. And today, using MOSIP and the technical tools and know-how available through it, 9 other countries from the global south are building their own national identity systems, right? Now, the G20 presidency has been a very important year for actually raising international awareness and building interest and traction around the idea of DPI. So, in the course of the year, France has agreed to launch UPI in its country. Japan is very strongly exploring the idea of how to adopt and adapt UPI within its territory. All right. And, the month of May this year was very important because in that month, the EU and India, the EU-India Trade Council, actually decided to set up a number of different kinds of agreements around DPI, where EU will try and make its own DPIs interoperable with India's. The Quad, India is, again, a very important member of the Quad, which is in the Indo-Pacific. Right. And the Quad leader's statement, again, talks about the transformational power of DPI, why this is important for the world to adopt, etc. Right? And of course, what we do expect from the parliamentary statement and the session today, and what has already come out in the G20 data statement, is this strong focus on digital transformation and DPIs. Okay, so we now have, India has been able to achieve this consensus around a shared understanding and definition of DPI. Other G20 countries, following India's lead, have accepted the idea of a high-level G20 framework for systems of DPI, which basically means how can other countries design and deploy DPI in their countries. And, finally, India, of course, has agreed, and other countries have welcomed this, to build a global DPI repository. Right. So all the tools for building DPIs, knowledge about it, will be made publicly available to countries around the world, not just within the G20. Yeah. And they can then build their own digital platforms. Right. So all of this is absolutely transformational. And, it's a matter of pride that India has been able to take the lead and offer a model and a value proposition which is valuable for the entire world, not just for developing countries. Right, sir. Thank you. Let's now once again take our viewers across to Yashobhumi, the P20 venue, and we are joined by my colleague
Sansad TV correspondent Shalini Khandelwal, and she joins us from Palash Hall in Yashobhumi. Over to you, Shalini. धन्यवाद शीतल। और मैं यहाँ पलाश हॉल में पहुँच गई हूँ। यहीं पर आज 2 मुख्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा। 2 सत्र कल हो चुके हैं और आज जो तीसरा सत्र है वो वन फैमिली, लैंगिक समानता, महिला विकास से महिला नेतृत्व में विकास की ओर, इस विषय पर आयोजित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गहमा गहमी चल रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, जो संसदीय अध्यक्ष हैं, G20 देशों के संसदीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल है। कई लोग यहाँ पर आ गए हैं और लगातार सिलसिला जारी है कि वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको बता दें कि आज इस सत्र में लैंगिक समानता, दुनिया की आधी आबादी को नेतृत्व में जगह दी जाए और वो प्रमुखता के साथ पूरी दुनिया के समावेशी विकास के लिए काम करें और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस पर सभी संसदीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे। और भारत की अध्यक्षता के तहत आपको बता दें कि G20 विकास कार्य समूह ने ये माना था कि विकास की प्रक्रियाओं में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसीलिए महिला सशक्तिकरण से हमें महिला नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। और हाल ही में भारत ने इसमें एक मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला दिया है। अब लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक बेहतर तस्वीर पेश की है, ये बताते हुए कि अब इस आधी आबादी को, जो अपने घर में भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए बेहतर नेतृत्व पेश करती हैं, वो राजनीति में भी एक दुनिया को, देश को नई दिशा दिखाएं। और इसके अलावा जो चौथा सत्र है वो है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है और पूरी दुनिया को एक दिशा दिखाई है। और वही भारत अपनी वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश करेगा, चाहे वो भुगतान प्रणाली हो या फिर पहचान प्रणाली। उसमें जो डिजिटल तरीके अपनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक संदेश देते हैं, ये दिखाते हैं। और आपको बता दें कि इन दोनों ही सत्रों में 5 कीनोट स्पीकर हैं, अलग अलग देशों के 5 स्पीकर। उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलेगा, 7 मिनट का समय मिलेगा सभा को संबोधित करने के लिए। उसके बाद इंटरवेंशंस होंगे और यहाँ से पूरी दुनिया को एक संदेश देगा। भारत के नेतृत्व में G20 देशों के संसद अध्यक्ष पूरी दुनिया के बेहतर के लिए, उसकी विकास के लिए चर्चा करेंगे। बहुत ही दिलचस्प ये दोनों सेशंस होने वाले हैं भारत के लिहाज से। एंड शालिनी विल कीप coming to you for more input on this. Talking about yesterday, about the 2 sessions that happened yesterday, the second session was on sustainable energy transition, gateway to green future. Lok Sabha Speaker Shri Om Birla, while inaugurating this session, said that India is implementing extensive action plans for the most ambitious clean and green energy transition in the world. Inaugurating the second session based on the theme One Earth, Sustainable Energy Transition, Gateway to Green Future, Lok Sabha Speaker Om Birla said that India is implementing extensive action plans for the most ambitious clean and green energy transition in the world. He added that India has set an ambitious target of achieving net zero by 2070. But before that, we have challenges to overcome in order to achieve these goals. भारत दुनिया की सबसे आकांक्षी क्लीन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए व्यापक कार्य योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। इस वर्ष 27 तक नेट जीरो का लक्ष्य हमने रखा है, लेकिन उसके पहले हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को प्राथमिकता दी है। भारत की अध्यक्षता के अंदर G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप के लिए हमने फंडिंग, ऊर्जा दक्षता, प्रौद्योगिकी गैप के विषयों पर व्यापक चर्चा की और सभी G20 देशों ने इसके सहयोग के लिए अपने को आश्वासन दिया है। सफल समावेशी हरित ट्रांजिशन के लिए हमारे सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इसलिए हम अपनी अपनी संसदों के अंदर भी इस तरीके की चर्चा करें और इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों
अनुभवों का लाभ सरकार प्राप्त करे और इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करें। Taking part in the session, Australian Speaker of the House of Representatives, Milton Dick shared efforts taken by his parliament in order to make it greener and sustainable. Particularly in the last 5 years, we have been making changes and introduced a number of energy efficient measures to make the Parliament more energy efficient and sustainable. We have installed more than 230 solar panels. They generate enough energy to illuminate lights in both the Senate and the House of Representatives chambers. Our main gas boilers were upgraded to heat and supply hot water to the building and have been transformed by 20% more energy efficient. All lifts were upgraded across the building, which use 30% less energy. The commercial kitchens that feed up to 5,000 people on a parliamentary sitting day have all been upgraded. Stating that energy is critical in our daily lives, the Speaker of the Parliament of Singapore informed about her country's ambitious targets to reduce carbon emissions and improve energy efficiency. Singapore has made significant strides towards a more sustainable energy future. We have set ambitious targets to increase the share of renewable energy in our energy mix, to reduce carbon emissions and to improve energy efficiencies. Singapore made early policy changes to reduce our greenhouse gas emissions, for example, by switching from fuel oil to natural gas, which is the cleanest form of fossil fuel, for power generation. 2 years ago, about 95% of our electricity was generated from natural gas, and this compares to only 18% in year 2000. We do not provide any subsidy for electricity so as to ensure energy is used judiciously. Addressing the session, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh maintained that India has remained steadfast in its commitment to sustainable growth, renewable energy expansion. Excellencies, India has been working steadily to build the ecosystem for sustainable energy transition. This ecosystem consists of 3 key players: the state, the industry, and the ordinary citizens. All 3 organs of the state are doing their bit to help bring about this transition. While the legislature and the executive are working as enabler to provide the legislative and policy framework for this transition, the judiciary is ensuring that all stakeholders adhere to their legally defined roles. The industry is acting as a provider for producing clean energy products. The citizens are also responding positively to the cause of clean energy transition by adopting clean energy-based products. Excellencies, despite being at the bottom in terms of per capita emissions, India has set ambitious targets for herself insofar as clean energy transition is concerned. Concluding the session, Lok Sabha Speaker thanked all the speakers for their valuable inputs and underlined the importance of clean energy. आज के सत्र में हमने सतत ऊर्जा ट्रांजिशन, हरित भविष्य की ओर विषय पर उपयोगी विचार विमर्श किया। सतत ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपनी पृथ्वी के साझे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमें अपनी भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की जरूरत है। Delegations from Brazil, Russia, Singapore, among others, also attended the session. अधिकृत हम लोग बात कर रहे हैं P20 के चारों सत्र के 2 सत्र हो चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण सत्र आज होने वाले हैं और हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिखाई है क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ विषय था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन मेरा या तेरा इसमें बटा हुआ विश्व नज़र आता था, लेकिन कल जो P20 में सत्र के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या आपको लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड नहीं तो कम से कम G20 के सदस्य देश तो एक पिच पर आ गए हैं?
देखिए, अगर पिच पर आ गया एक ही पिच पे, तो इसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ है जो जिनका परसेप्शन ऑफ व्हाट शुड बी डन वो अलग है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि अचानक से ट्रांजिशन करे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो थर्मल होता है, थर्मल एनर्जी, हालांकि इसके बारे में बहुत चर्चा करना मतलब अनफैशनेबल हो गया है, लेकिन जो थर्मल एनर्जी होता है वो ग्रिड में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सोलर एनर्जी में देखिए, यहाँ पे एक शब्द है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब आप जब एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं वो डिसरप्टिव ना हो। आपकी एनर्जी ट्रांजिशन ऐसा ना हो कि इसके वजह से ग्रिड कोलैप्स कर जाए। आपकी एनर्जी ट्रांजिशन ऐसा ना हो कि अचानक आपके पास बिजली की प्रॉब्लम आ जाए। जैसे इंडिया जैसे देश में जहाँ पे क्लाइमेट लेके इतना कुछ चल रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है सोलर के लिए, क्योंकि हालांकि हमारे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके कर्णधार इंडिया है, लेकिन पूरा 100% आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते, आप पूरा कोयला को छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ऑब्जेक्टिव है कि आपका जो ट्रांजिशन है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि आपका जो ट्रांजिशन है वो सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर अचानक सा एक दबाव ना पड़े। ये एक इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस चाहे जितना हम लोग बता रहे कि रिन्यूएबल एनर्जी में जितना इंडिया ने इन्वेस्ट किया है वो सराहनीय है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए हम एक छोटे देश की बात नहीं कर रहे, हम 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन भी इंपॉर्टेंट है, लोगों की जो एस्पिरेशन है, आज घर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है, आज घर घर में उनके काफ़ी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, इनका जो खर्चा है वो सबसे कम होता है थर्मल में। तो आपके पास इतना आपने इन्वेस्ट कर लिया थर्मल एनर्जी पे, आपके पास इतने कोयले हैं, क्या आप अपने देश की तरक्की के लिए सब बंद कर देंगे? आप नहीं कर सकते। तो ये इंडिया ने समझाया सबको कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास, जिनके पास कोयला है, वो क्या करे। इसीलिए कार्बन न्यूट्रल को जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है 2070 रखा गया। तो ये ट्रांजिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आप कल सारे गाड़ी को आप रिन्यूएबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दे, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक कंबशन इंजन के बेसिस पे पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एंसिलरी इंडस्ट्री है, वो गराज में काम करने वाला मैकेनिक, इनको पता नहीं क्या करना है। आपको ऐसे करना, और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आएगा। ये सारे जो विषय है इंडिया ने बारीकी से रखा वेस्टर्न देशों के सामने, और धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आया कि ट्रांजिशन जो है वो इतना आसान नहीं है। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कॉस्ट, टेक्नोलॉजी फॉर रिन्यूएबल, टेक्नोलॉजी फॉर विंड, बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट ऐसे एक देश से आता था जिसके साथ हमारे बॉर्डर्स में प्रॉब्लम है, हम कैसे पूरे उनके ऊपर डिपेंड करें। तो इसके लिए पूरा इकोसिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टेइक सेल्स, वो इकोसिस्टम इंडिया धीरे धीरे बना रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए थोड़ा टाइम इंडिया को देना पड़ेगा। ये सारे चीज बारीकी से इंडिया ने समझाया, और सिर्फ अपने लिए नहीं, ग्लोबल साउथ के छोटे छोटे देशों के लिए भी समझाया, और इसी वजह से आज एक सहमति बनी कि ठीक है, जो ट्रांजिशन है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। इसका क्रेडिट मैं पूरा G20 के टीम, प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे दूसरे जितने मिनिस्टर्स हैं उनको देना चाहता हूं, नहीं तो ये होता नहीं। राइट, बेसिकली सेटिंग प्रैक्टिकल गोल्स, एब्सोल्युटली, you have people friendly goals, targets, and you have practical challenges. You have to understand both, you have to accept both. The western countries have far more resources. You cannot expect a country like Sri Lanka to invest that much money on renewable energy that what a Norway can do. Unfortunately, there are countries in the West, I will not take names, it will not be proper, they make money by selling fuel, I mean oil, crude oil, and then with that money for their own domestic purpose, they generate electricity through renewable energy. Now, is it sustainable? Is it the right example? And then they expect us to follow the same things that they have done. Unfortunately, that's not possible. India has very, very ambitious goals for transition to renewable energy. So sensitizing the developed world. Absolutely. How difficult this task It was has been? not easy. And has there been some relief there now? Are we able to sensitize the Western world, the developed Well, I world? think what has happened is that they understand that the shift, the theater of economic activity is gradually moving towards Asia. The global south, as a country, we must understand India 30 years back was a very, very, in terms of economy, which was on the verge of bankruptcy. We have come from that area of being a fragile economy to become a major 5 economy. So we understand the challenges. We have told them, boss, you can have your goals,
but you need to understand the practical challenges. And it was not easy, let me tell you. That we faced, that the smaller countries face. There are so much of challenges of climate. How would you get solar in a country which has rain for 6 months? जी, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या ये बात सही है कि ग्लोबल असमानता थी और कहीं ना कहीं G20 की भारत की अध्यक्षता में वो असमानता कुछ कम हुई है या उसकी संभावनाएं पैदा हो गई हैं? जी योगी जी, आवाज आपने म्यूट किया हुआ है, शायद अनम्यूट करें। जी बोलें। जारी आपके पास? हम योगी जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। कल पहले दिन की लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि P20 शिखर सम्मेलन में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों पर G20 देशों की संसद में भी चर्चा जारी रहनी चाहिए और उसे नीतियों और पहल तक ले जाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और नए कानून अगर आवश्यकता हो तो बनाए जाने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों की भागीदारी वाले P20 शिखर सम्मेलन में कहा कि संसदीय कूटनीति को मानवता के बेहतर भविष्य का माध्यम बनना चाहिए। मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी टीम द्वारा पिछले 2 सप्ताह 14 डेज तक अथक प्रयासों के बाद हम P20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति बनाने में सफल हुए हैं। ये सफलता आपके सहयोग एवं समर्थन से संभव हुई है। ये हमारी सामूहिक उपलब्धि है और मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। आपके सहयोग से संयुक्त वक्तव्यों पर हमारे बीच में आम सहमति इसलिए बन पाई है कि P20 की बैठक में हमने अपने मतभेदों से ऊपर उठकर उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमें एकजुट करते हैं। इसलिए मुझे इस सभा की ओर से इस संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अंकित करने के प्रस्ताव हेतु बहुत प्रसन्नता हो रही है और हम सब के लिए ये गौरव का विषय भी है। संयुक्त वक्तव्य एडॉप्ट करने के बाद हम कल इसे औपचारिक रूप से जारी करेंगे। एक्सेलेंसी, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सब सहमति है? ओके, हम सब आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और संयुक्त वक्तव्य को एडॉप्ट कर लिया है। जी हाँ, प्रसन्नता जो है व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष और सभी के मुख पर जो है प्रसन्नता थी जब सहमति जताई गई। सीधा रुख करते हैं वेरी फर्स्ट डे और यशोभूमि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शालिनी वहां पर मौजूद है, उनके साथ कोई खास मेहमान भी हैं। शालिनी, क्या कुछ खास? बिल्कुल प्रतिबिंब, यहाँ यशोभूमि में मैं मौजूद हूँ पलाश हॉल के बाहर। पलाश हॉल में 10 बजे से एक विशेष सत्र शुरू होने वाला है जिसका विषय है लैंगिक समानता, महिला विकास से महिला नेतृत्व में विकास की ओर। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं जो हैं सिंगापुर के स्पीकर मिस्टर सिया। अ वेरी वार्म वेलकम इन संसद टीवी। गुड मॉर्निंग। Good morning. And सबसे पहले तो I would like to know about your experience being here in India. Well, it's not my first time to India, but I certainly, very much look forward to my visit here, and it's a very impressive and very efficient summit that we have had so far. So, congratulations to India, and in particular to your speaker, Mr. Om Birla. It's been a great Parliamentary Speakers Summit, riding on the success of the G20 summit that was again very successfully held in India. Thank you so much, and I would like to know about what would you like to say about India-Singapore relationship and bilateral talks going on here? Well, our bilateral relations between our two countries, India and Singapore, has been growing from strength to strength. And it's evidenced by, you see many high-level visits starting from our two prime ministers and many of our many ministers as well.
And today, in fact yesterday, I had many good talks with your speaker, and we hope to continue to enhance this relation at all levels, from our ministers to our parliamentarians and to our speakers as well. So it's something which we need to step up, because unfortunately during COVID, a lot of these things could not happen. While there were virtual meetings that were held, it's quite different from face-to-face meetings. And that's something which cannot be replicated, and that's something which summits like this and other exchanges is now back to the pre-COVID days, and something which we need to continue to build on. दोनों देशों के बीच जो मजबूत संबंध हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। सिंगापुर भारत के साथ यूपीआई हम साझा करते हैं दोनों देश आपस में, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट यूपीआई? वी बोथ शेयर दिस टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट? I think that is a milestone achievement. I think that's the first of its kind, and I'm very glad that both India and Singapore have established this link. It will make it easier and better for the people on both countries, and that's something that I think we need to continue to ride on, the digital economy and technology that now provides and makes things easier for all of us, in the way we do things, in the way we transact business, and just to make things more efficient, cheaper and better. Very, very thank you to connect with us and to be with Sansad TV and share your experiences and your thoughts about bilateral relationships with India. Thank you so much. Thank you very much. तो आप सुन रहे थे सिंगापुर के स्पीकर मिस्टर सिया को, और हम बात कर रहे थे यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है जो भारत और सिंगापुर साझा करते हैं, और आज डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म कैसे लोगों के जीवन को बदल सकता है, इस पर भी एक सत्र आयोजित किया जा रहा है। तो प्रतिबिंब यशोभूमि पर नज़र बनी रहेगी, और यहाँ से हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। प्रतिबिंब। Thank you very much, Shalini, for that wonderful interaction, and talking again about yesterday's joint statement. Lok Sabha Speaker Shri Om Birla informed that the joint declaration of the 9th G20 Parliamentary Speakers Summit got adopted after a deliberation of 14 days. IPU President congratulated Parliament of India for all the efforts to achieve the consensus on the final declaration. जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा को 14 दिनों के विचार विमर्श के बाद अपनाया गया। आईपीयू अध्यक्ष ने अंतिम घोषणा पर आम सहमति हासिल करने के प्रयासों के लिए भारतीय संसद को बधाई दी। It is important. It shows that the P20 has a concrete result with one declaration about important issues. Will not be the text that the country A, B or C would like, of course, because it is not a declaration of the country A, B or C. It is a declaration of all of us. And so, just to express all my gratitude to the India, to the Parliament of India for all the efforts, and to each one of you that worked very hard during these days in a meeting, to several meetings, a lot of hours to achieve the consensus that it was possible. Here in Delhi, we reached a final declaration. Thank you for all your efforts. और हम बता दें कि कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किम जिन प्यो के नेतृत्व में कोरिया के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। आप देख सकते हैं उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए संसदीय दौरों के निरंतर आदान प्रदान पर जोर दिया गया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल नुमान कुर्तुलमुस के नेतृत्व में तुर्की के P20 संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। भारत और तुर्की के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने को लेकर खास चर्चा भी हुई। रूस की फेडरल असेंबली की फेडरेशन काउंसिल की अध्यक्ष वेलेंटीना मतविनेको ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर खास चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों और सांस्कृतिक समानता पर चर्चा की। साथ ही भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
And talking of yesterday, later in the day, speakers and heads of delegations of Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, Oman, Spain, European Parliament, Italy, South Africa, Russia, Australia, Brazil, among others, paid floral tributes at the statue of Mahatma Gandhi in the Parliament House complex. That's all the representatives paying floral tributes to the Mahatma, and then all of them also visited the Parliament House, took a tour of both the Lok Sabha and Rajya Sabha chambers. This is the Lok Sabha chamber. And then they all visited the gallery in the Parliament House, and then we had the Honorable Vice President of India joining them. The delegation met Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar at the Samvidhan Sadan, and you're seeing pictures of that. खासा व्यस्त कार्यक्रम रहा कल का। अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, बात करें उपराष्ट्रपति की, और सभी प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर जो है पुष्पार्पित किया। और हमारे very interesting pictures we saw later in the day, particularly at night, when all of them visited the Parliament and visited our Lok Sabha, the newly constructed building, and they were also fascinated by what India has done, Pathikrit. Absolutely. In fact, if you look at that new Parliament building, it's like a microcosm of India's culture from all the parts of the country. And the manner in which it has been made, it is a perfect embodiment of where culture can be integrated with technology. You have the best of technology available, and you have the best of cultures available across the country, which have got a place over there. And then you discuss not about Delhi only, you talk about the whole of the country. So you get a feel of the whole country within that parliament. That's a very important part. Secondly, India, when it says that we are the mother of democracy, that parliament building has had, it would start a new journey. The previous one had a very, very precious history of what kind of transformation that has been brought in. We must remember one thing. Bringing in change in a small country is different than bringing change in a country with 140 crore people with various interests, various diversities, various challenges, and then the parliament works together for that. We must understand the best thing about this country: when a political party loses in the election, and if that party was in government, they simply move away and let the winner take over. There is no civil war kind of a situation. There is no tussle which we saw in some other countries. उसी की चर्चा हम कर रहे थे कि विविधता के बावजूद भी सत्ता हस्तांतरण इतना आसान होता है भारत जैसे देश में, वो अपने आप में एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक तो पहली चीज that is the thing. Secondly, you are expanding the parliament in the sense that you want more representative to come in, and it's a very inclusive one. Everybody, even if you are a critic of the government, you are given equal space to speak. The Speaker of the Parliament, the Lok Sabha, or in case of Rajya Sabha, they have always been so impartial in terms of allowing even dissent to be recorded. That is an example. And let me tell you, differences should be celebrated. It is not that everything has to be same. Uniformity will not make the world more beautiful. The world is beautiful because there is diversity. That is something we should celebrate. We should not just tolerate diversity. And mutual coexistence is one of our You cannot have development principles. Minus culture. Exactly. You have to respect cultures of individual places. Exactly. Let's go across to Mr. Anirban Sharma also now. Mr. Sharma, yesterday was superly successful. We had the joint statement being released on the very first day. What are your expectations today from today's sessions? I think it's going to be really very positive today as well, because a well thought out joint statement has been issued. Okay, consensus has been achieved. And very importantly, the New Delhi Declaration, the heads of state from the G20 came together and actually achieved consensus around a very wide range of issues. That has already come out, right? So, the statements and declarations from these engagement groups are essentially going to reflect, as my colleague said right at the beginning of this discussion, it is going to reflect many of the core themes on which consensus has already been achieved. All right. So I really do think that today's sessions, post the joint statement,
are going to carry on in that spirit of cooperation, camaraderie. And, I'd just like to build on something that my colleague just said before me, all right? This has really been a coming together of cultures, and we see this on the agreement being achieved in session after session. Now, what India has also been very widely praised for is turning the G20 into a people's G20, all right? Never before in the history of the G20 has a country been able to take awareness of the G20 as a group and what it does to every part of its, in India, every state, in some cases, even the remotest villages within a state, now have an idea about what the group of 20 is, what it does, and some understanding of international policy and cooperation. This is no mean feat. So, I would completely agree with my co-panelists that India has been able to take these discussions out of Delhi, out of the metros, taken it to the people in a way that has never been done before. All right? Now, that is within India. Around the world, too, India has done so much to be able to achieve consensus on things on which no agreement had ever been reached before. For example, the inclusion of the African Union. Okay, so this is now really the G21. It is entirely due to India's efforts and the support from other partner nations within the G20 that the African Union is today a full member, all right, of the G20, increasing the numbers by one. You want to add? This spirit of positivity and cooperation is going to carry on till the end of the P20 summits. So I certainly think that is going to be reflected across all the discussion points of the two sessions today as well. Right, Mr. Sharma. Pathikrit, you want to add to this? I just wanted to add one thing, what Anirbanji said right now. I have been the chief coordinator for Youth Engagement Group of G20. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation is the secretariat. So we had in the last 10 months done 1,600 programs across the country. We have gone to universities, we have gone to colleges, we have even gone to suburban regions and villages. We did chopals and made people understand the implications of having the G20 presidency. Even to ground level chapals. Absolutely. We have gone to schools, we have gone to vidyalayas in rural India, and we have made them understand the implications, how the G20 and what are being discussed will impact your life. So there was a long time in this country where people thought, "Arey, these are things only that are happening in Delhi." The capital. So we had programs from Arunachal Pradesh to Nagaland to Manipur to every city in this country. 1,600 programs. These are for connecting with the youth of the country. And our declaration that, in fact, we had a successful declaration of Y20 itself. Many of the recommendations came from the grassroots level. So these were added. And if you look at the joint G20 declaration, the final declaration, many of the points of T20 or Youth 20, these are all included in that. और सबसे बड़ी बात है कि बड़े शहरों में ही G20 की बैठकें नहीं हुई हैं, छोटे शहरों में भी आयोजित हुई हैं और प्रधानमंत्री ने तो इसको डेडिकेट ही कर दिया है जनता को. Absolutely. और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जहां पे भी प्रोग्राम हुआ, जिस राज्य में, जिस शहर में, उस राज्य का कल्चर को रिप्रेजेंट करवाया गया. उस राज्य को के जो टूरिज्म है, उस राज्य के जो यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स है, दोज वर द मेमेंटोस दैट वाज गिवन. उस राज्य के कल्चरल प्रोग्राम हुआ. सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम the foreign delegates got an understanding about the enormous diversity and the beauty of India's culture, which is as much part of India as India's GDP. Pathikrit, just to add a bit from my own personal experience, I've had the chance to cover a couple of these summits, the G20 summits in other parts of the world, and the difference that I observed and everybody else observed in India is so stark. They were such bureaucratic, not to say that they were not organized well or proper, but more or less G20 would mean a bureaucratic meet and people talking about larger international issues. But this was so inclusive. Yes, I'll just tell you one thing, Shalini ji, and we got a lot of support from the government, but the secretariat for each of the engagement groups were from the private sector. Like Anirban ji talking about T20, that's Observer Research Foundation. For Youth 20, it was Shyama Prasad Research Foundation. So you had a very, very, what you call public-private partnership. And we must say the state governments, wherever we went, whichever party was in power, it never mattered. The kind of support that we got from each of them, the manner in which the government made sure that everything is made available. The manner in which uniqueness of, in fact, many places, even we were not aware of the unique handicrafts that were given as memento. How the millet was promoted as, a viable solution for food crisis that the world is facing today. These gifts were so unique.
So I think it was a great journey for the last 9-10 years, 9-10 months in terms of promoting India. योगी जी, यहाँ पर बात चल रही है कि क्या कुछ G20 सदस्य देशों को हासिल हुआ G20 से और अब P20 के माध्यम से हो रहा है। भारत को भी खासा हासिल हुआ है और अलग अलग शहरों में जो G20 से जुड़ी हुई बैठकें आयोजित हुई हैं, उससे देश भर का इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। दो बहुत अहम जो है केंद्र कह सकते हैं, भारत मंडपम और यशोभूमि सामने आए हैं। क्या उस नजरिए से देखें, अगर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के नजरिए से देखें तो भी G20 और P20 खासा महत्वपूर्ण हो जाता है? सही कह रहे हैं। देखिए, इस दोनों जो ये इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई है, उससे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे दिल्ली का हो या कुछ और स्टेट्स वगैरह में हो, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये मंडपम जो है बना टाइप से, उसके बाद ये यशोभूमि बना टाइप से, और तमाम इसके अलावा जो है हमारा होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब को जो है मॉडर्नाइज किया गया। तो इससे जो है देखिए काफी सुविधा होगी लोगों को, और आगे की जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होंगी उसमें भी इससे फर्क पड़ेगा। और दुनिया के सामने जो है एक हमने ये दिखा दिया है कि भाई भारत जो है वो उसमें कैपेबिलिटी है कि इस तरह की बड़ी लेवल की इंटरनेशनल मीटिंग्स को होस्ट करने की। और उसके अलावा सिर्फ कैपिटल ही नहीं, बाकी जो स्टेट्स है उसमें भी जो है जहां पर जरूरत था जगह जगह चेंजेस लाए गए। तो इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस से जो है हमारी कैपेबिलिटीज जो हम दुनिया को हमने प्रोजेक्ट की है उसमें बहुत एक मेजर चेंज आया है। एंड आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है सारी दुनिया के लिए। और दुनिया मानती है कि भाई जो भारत ने G20 की मेजबानी की है वो बहुत अच्छी रही है। डिक्लेरेशंस कंसेंसस के साथ अडॉप्ट किए गए हैं बड़े मुश्किल सिचुएशन में। तो ओवरऑल आई थिंक वी हैव डन ए वेरी गुड जॉब। Right, and as the Prime Minister Pathikrit mentioned yesterday, that this is a Mahakumbh. This is not just another multilateral forum meeting happening in the country. It's a Mahakumbh for us. It's a festival for the country. Yes, Shalini, and it's also Manthan that you know the Amrit is gradually coming out. In fact, let me tell you, we had our summit of U20 in Varanasi, the Rudraksh International Convention Center where we had it. You know, it is comparable to any world-class infrastructure anywhere in the world. That is how the Prime Minister has made sure that the whole country's infrastructure gets upgraded, hotel infrastructure as Sir also mentioned, and ideas coming out. So this is the ideal example, this is the perfect example of how you democratize something. The democratization jo hua hai na, and that's why I've heard some people from Brazil saying that India has raised the benchmark so high that the next time when the next presidency... The Brazilian delegation actually did mention that. Pathikrit, let's go across once again to Yashobhumi, to my colleague Kriti, and she has a special guest with her. Kriti, over to you. Just first show our viewers this very beautiful picture dominating the national newspapers today. If I request my camera person to zoom his camera and show our viewers this beautiful picture. President of Senate of Mexico, Mr. Vera, tying Rakhi to our Prime Minister, Modi. And joining us right now is a very special guest, Mr. Vera herself. Ma'am, welcome to Sansad TV and thank you so much for joining us. A very special day. You tied Rakhi to Prime Minister Modi. How has been the experience being here, interacting with Prime Minister, and of course, a very specific cultural significance of tying Rakhi? Por haber venido a la India con su delegación tan importante de México y también este evento inédito en que usted ha tenido la oportunidad de personalmente atar un Rakhi a nuestro primer ministro querido y cuál ha sido la experiencia de todo eso, especialmente este intercambio cultural tan importante para los dos países. Para mi nación, el pueblo de México, ha sido una noticia que le ha llenado de alegría. Aunque somos países muy lejanos, compartimos en este momento
el florecimiento de una democracia que impone en el mundo respeto, esas cualidades que hoy tenemos, dos gobiernos libres, soberanos, que buscan la libertad de sus pueblos y el bienestar de sus pueblos es lo que nos hermana. Ayer tuve la gran oportunidad de vivir un momento más allá de lo material. Yo quiero decirles un espacio a lo espiritual, a lo que va más allá de lo material. El hecho de que el primer ministro, a quien hoy llamo Vai Narendra Modi Ji, me ha hecho el honor de regalarme este hermoso vestido. Ustedes le tienen un nombre especial a este atuendo que porto con mucha alegría porque mi hermano espiritual hizo que en mi corazón naciera la necesidad de hoy regresar a México, buscar a la comunidad de la India, compartir con ellos esta experiencia y lograr que esta hermandad que aquí hemos sellado con el Rakhi me permita llevar el mensaje de amor y de fraternidad que les envía el primer ministro y que nos dice, más allá de las fronteras, somos hermanos para siempre. Eso voy a hacer porque creo que ese es el objetivo por el cual estoy aquí. Cuando llegué quiero decirles que sentí una fuerza muy importante de la cultura y de la raíz profunda de la India, algo especial. Desde ayer cuando yo vi al primer ministro y de repente me llama y me pregunta de dónde vengo, eso nos hizo entender la similitud histórica que hoy compartimos. Gracias. Let's get the English version for our viewers. So please could you translate? So she's saying there's been a wave of joy and happiness in Mexico, back home where she's from, because this has come splashed all over in Mexico also. And she says that these two countries, we already share a lot of love, a lot of respect for each other. We are vibrant, dynamic democracies under two very dynamic prime ministers, yours and ours. And especially touching for her was the moment when she actually went to Modi ji and she could tie a Rakhi on the wrist of Bhai Modi ji, which she herself said in Hindi, in Hindi. And she's saying that this was a moment which was very emotional for me, touched my heart, it touched me to my soul. I was not ready for it because it was a very spiritual, a very a divine thing that happened, because there are no words to express what she's gone through. And her own bhai, her own brother, has gifted her this beautiful dress, which she knows that it is called salwar suit, and she's very happy, she's very proud to be wearing it. But this is just another symbol of the love and the bonds that India and Mexico share with each other, and she wants to go back to her country, meet with Indian people, and tell them about her experience of having lived through these moments which are so precious to her, which she will carry always with her in her heart. And she's also saying that yesterday when Modi ji called her to come and talk, it was at that moment that she realized that her spirit was ready, and she knew that there is something, a close connection which they share, which is divine. And this is for India and Mexico to carry on these friendship bonds, these brother and sister bonds for the future, because we are brothers and sisters, and with love and fraternity we would be able to make a change for the world. Absolutely, and please tell her that she's looking absolutely beautiful in this beautiful Indian attire. Well, Madam stands as personification of strong ties and bond between India and Mexico. Back to the GRD studio now. Absolutely, Kriti, and the emotion is so much evident on her face when she talks about the Rakhi. And although before the interpretation we couldn't understand the language, she was talking in Spanish, of course, but the essence was communicated by the way she was talking about how deeply touched she was with the way the Prime Minister blessed her after she tied the Rakhi. आप जिसका बात कर रहे थे कि जो है एक दूसरे की संस्कृति को समझना, परंपरा को जानना, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके के शिखर सम्मेलन में, और ऐसी तस्वीरें आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां भी बनी हैं। देखिए, ये छोटे छोटे चीज़ जो होता है ना, इसकी महत्व जो है बहुत बड़ी है, और इसी वजह से जो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के साथ जो हुआ पिछले एक साल से, दीज आर द थिंग्स विच ब्रॉट पीपल टुगेदर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफैक्ट आप देखेंगे
इफ यू टेक ऑफ द लेयर्स, अल्टीमेटली ये जितने भी कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते कहीं ना कहीं कल्चर सारे एक ही है. So that warmth that she felt because Prime Minister as her brother allowed her to tie that Rakhi, that warmth is universal in terms of a brother and a sister. So I think we have worked as a country in a better way in terms of bringing people together. और आपने जो बात कही थी, बहुत खूबसूरत बात कही थी कि एक ही रंग में पूरे विश्व को जो है वो रंग देना अच्छा नहीं है, बल्कि जो विविधता है, जो अलग अलग रंग हैं, वही इस पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं. और यही रंग कहीं ना कहीं G20 में और अब P20 में देखने को मिल रहे हैं. बहुत सही कहा आपने. और इसी वजह से देखिए, एक परिवार भी जो होता है ना, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार में लोगों की अलग अलग विचार होते हैं. इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जो कॉइन किया थीम वसुधैव कुटुंबकम, दिस इज वन बिग फैमिली, देयर विल बी डिफरेंसेस, लेकिन उस डिफरेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए. ये नहीं है कि हर चीज में लड़ाई में मिल जाओ, और ये नहीं है कि आप एकदम सूट बूट में आओ, सिर्फ मीटिंग करो चले जाओ. ये जो कल्चरल एक्सचेंजेस है, दैट ब्रिंग्स द होल वर्ल्ड टुगेदर, मेक पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर, और उसी से ही तो भाईचारा तैयार होता है. यू स्टार्ट फीलिंग एज वन. That kind of an incident where the Prime Minister allowed her to tie the knot, this brings Mexico and India closer than any other thing possible. So these are the small things that made a lot of difference in the last 1 year. और टीना भी हमारे साथ जुड़ गई है. टीना, वेलकम. Thank you, Pratibim, and hello and good morning, viewers. I am Tina Jha. So today is the final day of the G20 Parliamentary Speakers Summit, and 2 more thematic sessions lined up for today. But as the discussions were going on before I joined about that personal touch that makes events like these all the more memorable. So we saw the Mexican Speaker of the Senate who tied Rakhi to the Prime Minister yesterday after he inaugurated the summit. And today, after the thematic sessions, Vice President Jagdeep Dhankar will host the lunch for all the visiting dignitaries, for all the P20 guests, the presiding officers, the parliamentary delegates. Our correspondent gets the glimpses for us from the venue. We're reporting from the Amaltash Hall of Yashobhumi, where Honorable Vice President of India is set to host lunch for our P20 guests. I request my camera person to pan his camera a bit and get the glimpse for our viewers. While the table, you can see, has been immaculately prepared. The cutlery looks absolutely stupendous. The food items will be placed in a sequence from starters to desserts. P20 guests are set to experience a gastronomical extravaganza. After India's initiative, the UN declared 2023 as International Year of Millets. Even remote millet farming communities across India have joined this millet movement. Keeping in mind the concept of world on your platter, India is celebrating the Year of Millets and showcasing wellness cuisine amongst other regional Indian specialities. We are offering foreign delegates diverse flavors of Indian cuisine. Special menus have been curated, focusing on fresh and local produce. Apart from this, different thing about this special royal feast will be the food coming from the Indian states from Kashmir to Kanyakumari, which have their tastes, recipes and flavors packed for our P20 guests. And of course, this lunch gains paramount importance because Vice President of India has always spoken about supremacy of Parliament. He says that Parliament is the North Star of democracy, which embodies the will of the people and articulates the aspirations of the people. Reporting from Yashobhumi with camera person Vinod, I'm Kruti Mishra for Sansad Television. और हम सीधे चलते हैं यशोभूमि, जहां पर पवन हमारे साथ में हैं. पवन, आज जो सेशन रखा गया है उसमें क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास अभी तक हो चुका है? रामवीर जी, आज की क्योंकि दूसरा दिन है आज, तो आज की शुरुआत अभी हो चुकी है क्योंकि 10 बजे से जो है अभी सेशन चल रहा है. मैं अभी 5वें फ्लोर पे हूँ यशोभूमि के, तो यहीं से सारे के सारे लिफ्ट में आके जितने डेलीगेट्स हैं, चाहे स्पीकर्स हैं, चाहे डिप्टी स्पीकर्स हैं, यहीं से ऊपर को जा रहे हैं. सामने आप पीछे अलग अलग G20 देशों के फ्लैग्स भी देख सकते हैं, तो यहीं से वो ऊपर जा रहे हैं. अभी तेजी से जाते हुए मुझे बहुत सारे लोगों को देखा. बांग्लादेश की जो स्पीकर हैं शिरीन चौधरी जी, वो यहाँ से अभी ऊपर गई. और बड़ी खास बात ये है कि जो 10 बजे से जो ये सेशन स्टार्ट हो रहा है वो जेंडर इक्वालिटी पे है, वीमेन लेड एम्पावरमेंट पे है. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है महिला स्पीकर्स ही रहने वाली हैं, चाहे MPs जो साथ में डेलीगेशन में आए हैं वो उसमें रहेंगी, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर तो रहेंगी. अभी मैंने सुना भी कि मैक्सिको की जो स्पीकर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है, और कितनी वो उत्साहित और
गर्व महसूस कर रही थी इस विषय पर। तो विषय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर चर्चा जो है वो 11:30 बजे तक का सेशन है जो इस पे होना है। और अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत बहुत एडवांस है इस मामले में, और अभी हम बातचीत कर ही रहे हैं कि भारत में जो लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे 33% आरक्षण महिला एमपीज होंगी। अब इसके लिए ये दोनों सदनों से पारित हो गया है और आने वाले चुनाव जब भी होंगे आगे 2026 के बाद, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। और जहाँ तक पंचायती राज की बात है, वहाँ पे हम बहुत पहले से महिलाओं को 33% आरक्षण है। हमारी जो ग्राम पंचायती स्तर पे जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का वो बहुत अच्छा है और वो भारत के जो विकास है उसमें भी लगातार योगदान दे रही है। मैं आप सभी का ध्यान देना चाहूँगा कि जो अभी G20 का सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन पिछले महीने, उसमें जो डेक्लेरेशन आया था, दिल्ली लीडर्स डेक्लेरेशन आया था, उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई थी इस बारे में। और मैं वही कोट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि महिलाओं को लेकर उस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया था। उसमें कहा गया था कि एनहेंसिंग इकोनॉमिक एंड द सोशल एम्पावरमेंट। जी क्या पवन जी, जो हम ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन के बाद भी रक्षाबंधन हो रहा है, ये इस तरह की जो ये मैसेज है, इस तरह की जो बातें हैं, ये अनौपचारिक माहौल को आप किस तरह से भांप पा रहे हैं इस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को? क्योंकि ये जो तस्वीर है, जी जो मैक्सिको की स्पीकर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है कल। और अभी हमारे संवाददाता ने अभी उनसे बात भी की जब वो अंदर जा रही थी हॉल में, तो बड़ी अच्छा महसूस कर रही थी। हालांकि वो अपनी भाषा में बोल रही थी, तो उसका जो इंटरप्रेटर ने जो कहा कि उन्होंने कहा कि वो बहुत गर्व महसूस कर रही हैं और मेरे भाई, उन्होंने भाई मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को भाई कह के संबोधित किया वहाँ पे। तो वो इमोशनल भी थी उस विषय को लेकर। तो ये जो सारी चीज़ें देशों के स्पीकर्स आते हैं और ऑफिशियल लेवल पे सारी चीज़ें होती, पर जब ये पर्सनल टच उसमें जुड़ जाता है रामवीर जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लीडर्स के बीच में जो कनेक्ट है वो दोनों देशों के बीच में हो, चाहे G20 जितने भी सारे मेंबर्स हों। कल जब मोदी जी सभी लोगों से मिल रहे थे, यहाँ पे जो स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स आ गए थे, उनके बीच में उत्साह में देख रहा था क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था। तो मोदी जी से मिलने की जो इच्छा उनके बीच में थी, क्योंकि वर्ल्ड लीडर के तौर पे जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो बड़े गर्मजोशी से उनके साथ मिलते हैं, पर्सनल कनेक्ट बनाते हैं। और यही कनेक्ट ये तस्वीरों में भी हमें दिख रहा है। और अभी जो सेशन चल रहा है उसमें भी इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है। रामवीर जी। Absolutely. So the first thematic session is about to begin. Lok Sabha Speaker Om Birla will